Welcome to our present discussion. We have started accounting ratio chapter for the part B syllabus of accountancy CBSE, analysis of financial statement. Accounting ratio is the big chapter. Various ratios we have calculated, we have shown on the whiteboard also. Recently, in previous two episodes, I have discussed regarding the trade receivables turnover ratio, and many sums are given in the books. Today also, I will take a sum of trade receivables turnover ratio, because after calculating the trade receivable turnover ratio, another thing is to be calculated also, that is called average collection period. That average collection period was not calculated, was not discussed before you previously. So how to calculate the trade receivables turnover ratio and how to calculate the average collection period, that is to be reflected from this sum. Here is one sum. Opening debtors given, credit sale is given, cash received from debtors given, discount allowed given, goods returned by debtors given. Calculate trade receivables turnover ratio and average collection period. At first, we have to keep in mind, we can never calculate the average collection period if we don't calculate the trade receivables turnover ratio. So first we have to calculate the trade receivable turnover ratio, then we can calculate the average collection period. The trade receivables turnover ratio. At first we have to write in the solution part, the formula of trade receivables turnover ratio. What is the formula of trade receivables turnover ratio? Credit revenue from operation by average trade receivables. It was discussed in previous episodes also. So we have to write here the formula. Credit revenue from operation by average trade receivables. We will calculate this. But question is here, average trade receivables, the formula of average trade receivable is opening trade receivable plus closing trade receivable by 2. It is the mysterious in the question. Opening debtors is given. Previously also I have told you that the trade receivable includes two items. One is debtors, another is the bills receivable. Bills receivable information is not given in the question, but debtors information is given in the question. So opening debtors plus closing debtors by 2, that also will be considered as the formula of average trade receivables. So here average trade receivable is equal to opening trade receivable plus closing trade receivable by 2. In question, opening debtors given. Opening debtors is to be considered here. Opening debtors is to be considered here as opening trade receivables. That is opening debtors plus closing debtors by 2. So opening debtors given 1,20,000 plus closing debtors is not given in the question by 2. So we have to calculate the closing debtors from these informations.
For closing debtors, just one formula also you have to keep in mind. Closing debtors is equal to opening debtors plus credit sales minus cash received minus discount allowed minus sales return. फॉर्मूला याद रखने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट वी शुड हैव द कैपेबिलिटी टू प्लानचेट द फॉर्मूला. कैसे? क्लोजिंग डेटर्स का मीनिंग क्या है? एट द ईयर एंडिंग व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ द डेटर्स इज कॉल्ड द क्लोजिंग डेटर्स. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हाट एवर वॉज द वैल्यू ऑफ द डेटर्स, दैट वॉज द ओपनिंग डेटर्स. Suppose April to March, sorry, this is the accounting year. On 1st April, debtors was something. So that debtors was opening debtors. After 1st April, throughout the year, whatever credit sales are made, credit sales, because cash sales is not to be considered. क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल जितना हुआ है पूरा साल भर में वो भी तो डेटर्स में फॉर्म करेगा, तो उसको ऐड किया जाएगा. फॉर्मूला देखो, ओपनिंग डेटर्स के साथ क्रेडिट सेल जितना हुआ पूरा साल भर में उसको ऐड किया गया. अब क्रेडिट में जितना सेल हुआ, सपोज 10 लाख रुपीस का क्रेडिट में सेल हुआ, वहां से 2 लाख रुपया मिल चुका है, तो कैश रिसीव हो गया, तो अभी 10 लाख रुपीस क्रेडिट सेल था, 2 लाख रुपया मिल चुका है कैश में, तो अल्टीमेटली क्रेडिट सेल कितना हुआ? 8 लाख हुआ. इसीलिए कैश जो रिसीव हो गया उसको माइनस किया गया, तो क्रेडिट सेल कितना रहा? 8 लाख सपोज. अब उसको अगर कुछ डिस्काउंट अलाउ किया गया, सपोज 50,000 का डिस्काउंट अलाउ किया, तो आखिर हम लोग को वो डेटर से मिलेगा कितना? 7,50,000. मतलब डिस्काउंट अलाउड भी माइनस होगा. उसके बाद अगर जितना अमाउंट का क्रेडिट में सेल किया, उसके बाद अगर वो कस्टमर हम लोग के पास रिटर्न कर दिया, तो उसका पैसा तो डेटर्स में नहीं जुड़ेगा. इसीलिए ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस आइटम्स आर माइनस फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल से डेटर्स का जन्म होता है. तो देखो, ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में दिया है 1,20,000, 1,20,000, तो 1,20,000 लिखेंगे. ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल दे दिया आपको 10 lakhs माइनस कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 9,60,000, 9,60,000. Cash receipt from debtors 9,60,000. Okay. Minus discount allowed 80,000. So how much goods returned by debtors? It is also given. That is, sales return is also given. Goods returned by the debtors. 20,000 minus होगा. So ultimately whatever 80,000, 20,000, that is 1 lakh, 1 lakh, 9 lakh, 10 lakhs, 60,000, so 60,000. Ultimately this calculation is coming 60,000. 11 lakh 20,000, 10 lakh 20,000, yes, 60,000. So closing debtors is valued at 60,000. So that closing debtors we have to put in this formula. The opening debtors plus closing debtors 60,000 by 2, that is 1,80,000 by 2, that means 90,000. So 90,000 is the value of average trade receivables. So we have to put it here, 90,000 average trade receivables. Now question is credit revenue from operation. Credit revenue from operation is given. Revenue from operation means the sales. So credit sales is given to you 10 lakhs. That 10 lakhs will be coming here.
सो 1 2 3 4 1 2 3 4 9 से डिवाइड होगा 9 1 जा 9 9 1 जा 9.1 9 1 जा 9 9 1 जा 9 11.11 that is 11.11 times. So trade receivables turnover ratio is 11.11 times. Now question is another also to us, average collection period. Average collection period, इसका एक फॉर्मूला है 365 days by trade receivables turnover ratio. ये फॉर्मूला 365 days by trade receivable turnover ratio. That's why I have told previously, if we cannot calculate the trade receivable turnover ratio, we never can calculate the average collection period. So 365 by this 11.11 times. तो 11.11 को आप 11 times consider करके भी कर सकते हैं, and whatever result will be coming, it is by days. 11 3 33 3 35 again 11 3 33.2 is coming, 11 1 11 9 11 8, so approx 33.18 days. So it will be considered as the 34 days. Now question is 34 days or 5 days or 6 days or whatever result will be coming for this, what is the meaning of this? It is called the average collection period. ध्यान दीजिएगा अभी, trade receivables turnover ratio, that means 11 times, that means ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, डेटर्स से पैसा कलेक्शन होता है, टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कलेक्शन होता है डेटर्स से 11 बार, 11 टाइम्स. बट 11 टाइम्स डेटर्स से कलेक्शन होता है मतलब क्या? अगर हमारे कंपनी का कोई डेटर्स अगर क्रेडिट पे सामान खरीद के लेके जाए तो उनसे क्या 11 बार पैसा लेंगे? दैट नॉट. ये एक कैलकुलेशन है, एनालिसिस है कि नॉट ओनली वन डेटर इज ऑफ माई बिजनेस, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, वेरियस डेटर्स आर देयर इन द मार्केट हु कैन कलेक्ट, हु कैन परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम माई बिजनेस. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 11 टाइम्स. एंड जब हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं 365 days by 11, that means approximately 34 days have come. 34 days का मतलब क्या है? जो डेटर्स हो गया है, डेटर्स से जो पैसा कलेक्शन होगा, ये कंपनी का पूरा साल का एक एवरेज कैलकुलेशन किया जा रहे हैं कि एवरेजली 34 डेज के बाद डेटर्स से पैसा कलेक्शन होता है. हो सकता है कि मिस्टर एक्स के पास हमने आज क्रेडिट पे सेल किया तो आफ्टर 3 डेज उसने पैसा दे दिया, ओनली 3 दिन के लिए वो डेटर्स था मेरा. फिर मिस्टर वाई के पास सेल किया तो वो 90 डेज के बाद पैसा दिया. तो इस तरह जितने डेटर्स से पूरा साल भर का जो खेल होता है सेल वाला, तो वो डेटर से जो किसी डेटर से 4 दिन के बाद मिलता है, किसी डेटर से 10 दिन के बाद मिलता है, किसी डेटर से 6 महीने के बाद भी मिलता है, किसी डेटर से 7 महीने के बाद मिलता है, किसी डेटर से 2 महीने के बाद मिल रहा है, किसी डेटर से 2 दिन के बाद मिल गया. तो ये एवरेज किया जाता है. ये एवरेज नहीं करने से कंपनी का एक्टिविटी किस तरह है, एम्प्लॉइज या फिनेंशियल मैनेजर हाउ मच एफिशिएंट, ये कभी कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ये कभी एनालिसिस नहीं हो पाएगा. तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग या फिनेंशियल मैनेजर क्या स्टेप लेगा, ये मीन कर रहे हैं यहाँ पे 34 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड. मतलब कंपनी इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स एवरेजली every after 34 days.
और 34 डेज 11 बार करेंगे तो ये 365 में पहुंचेगा, यानी एक एवरेज कलेक्शन पीरियड। प्रीवियस ईयर में सपोज दिस ईयर ये कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में एवरेज कलेक्शन पीरियड था 30 डेज, उसका प्रीवियस ईयर में एवरेज कलेक्शन पीरियड था मान लीजिए 20 डेज, तो उसका प्रीवियस ईयर में एवरेज कलेक्शन पीरियड था 19 डेज। तो इसका जो एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड देख के पता चल रहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड में डेज हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब है माय कंपनी फाइनेंशियल मैनेजर इज नॉट एफिशिएंट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स, सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस to allow the credit facilities to the debtors. It means this. So you do the sum from the book on the basis of both the things, trade receivable turnover ratio and the average collection period also. Okay, thank you.